Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 13th of November. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned till the end. In this video students, we will be talking about a campaign that was launched by JP Nadda ji to eliminate tuberculosis. Next thing, we will be talking about Urjaveer scheme that has been launched in Arunachal Pradesh. Then, which country has assumed the chairmanship of 68th UN CND? We will be discussing in this video, as well as we will be talking about various COP29 initiatives and demands that were signed during this by India. We will be discussing all these things in detail. This will be quite an interesting session. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. We upload daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on daily basis. Then weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly, so that it becomes easy for you to grasp all the important content for the competitive exam. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Then students, first thing we are talking about is national affairs, and in this too we will be talking about tuberculosis. TB is a disease that is affecting your that affects your lungs. It is a communicable disease, and in order to eliminate this, right, recently JP Nadda ji, they have launched a intensified 100-day long TB elimination campaign, right, and this has been launched where it was launched in Panchkula, that is in Haryana. This campaign, it will be running till 24th of March 2025. Also, this campaign is a part of the National TB Elimination Program that was launched by Ministry of Health and Family Welfare and Government of India. We have set up basically a target, that is the year 2025, to make India TB free. Right? So what is the name of it is? It is TB Elimination Campaign, launched by JP Nadda ji, 100-day campaign, and it was launched in Panchkula, Haryana. Apart from this, there was one more in program, right? If I ask you, Mission Himveer. This was launched by which state? Mission Himveer was launched by Arunachal Pradesh, and this Mission Himveer is basically to boost the local economy of Arunachal Pradesh. Next is Union Minister Manohar Lal Khattar, right, and ex-Chief Minister of Haryana, has launched the Urjaveer scheme in Andhra Pradesh, right? This Urjaveer scheme, basically what is this scheme? This Urjaveer scheme, basically remember first thing, that it is implemented by whom? It is implemented by Energy Efficiency Service Limited. And as this Urjaveer scheme, Urja means energy, correct? It is basically to make or to promote the energy efficient appliances, correct, that will offer the economic benefit to the individual, as well as they will be energy efficient, it will be also good for the environment, right? To adopt energy efficient appliances by the customers, right? Here you can see this is this New Delhi based Energy Efficient Service Limited. They have recently signed a joint venture, or that is a joint venture of public sector undertakings under the Ministry of Power, and this Urjaveer initiative was launched by them. Here the government aims to involve and train 1,12,000 private registered electricians on the Urjaveer platform. They will become Urjaveers, right?
these electricians will be known as Urjavis, right? And they will promote energy efficient appliances and also help the general public in adopting the energy saving techniques that will not only benefit the environment but also will be pocket friendly. Next is India. India has assumed the first time chairmanship of 68th United Nations Commission on Narcotic Drugs in order to eliminate drugs or in order to control the illegal use of the drugs by various people, right? And it is very bad. Drugs should not be consumed by individuals, right? So in order to make sure that, right, our country became or has assumed the chairman first time of the United Nations Commission on Narcotic Drugs. This announcement was made by the Indian Embassy of Austria, making a significant milestone in the country's global leadership. Apart from this, recently tell me first Ashtalakshmi Mahotsav. First Ashtalakshmi Mahotsav was held where, right? It was held in New Delhi, hosted by the government of India for the first time, Ashtalakshmi Mahotsav. Next is DPIIT has partnered with Flipkart to support the Indian startups through $100 million fund. I repeat, DPIIT, that is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that comes under the Ministry of Commerce and Industry, has signed a memorandum of understanding with Flipkart Private Limited, and this is basically to enhance the growth of tech startups across India, right? So that tech startups can grow, which will in the end provide job to various individuals, right? So in order to basically grow these startups so that better services can come into the market and job opportunities, various job roles can be created. Correct? So it is DPIIT that has signed this memorandum of understanding here. Apart from this, if I ask you Gharchola saris, this is a product that recently got GI tag. It is from which state? It is from Gujarat. Gharchola sari. Next we are talking about international affairs. India at COP29, various key initiatives and demands for the global climate finance. Right? We are talking about COP29. Right? Can you tell me where was this COP29 held? COP29 was held in Baku, Azerbaijan. It was from 11 to 22nd of November, right? And here remember from India, it was Ministry of Environment, Forest and Climate Change along with CDRI, that is your Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, right? And they talked about various strategies, adopting various strategies, correct, in India and globally also, right? Apart from this, if we talk about this here, remember, first thing is Union Minister Kirti Vardhan Singh has delivered the India's national statement, right? He delivered this at the high level segment of the COP29 held in Baku, Azerbaijan. Here he talked about India's renewable energy capacity. He stated that the renewable energy capacity in India has tripled, that is, it has become 3 times since 2024, and our target is to achieve 500 gigawatt by 2030. Then here we talked about Mission Life. Mission Life. What is Mission Life? It is the lifestyle for the environment, right? This Mission Life will basically help to achieve the sustainable development goals. It will also make sure that we follow the renewable sources of energy and make sure that we protect our environment. Apart from this, India and Sweden, we have also signed a industry transition partnership. In this partnership, we will be working towards enhancing the manufacturing in both our countries. Apart from this, we will be talking about LEAD Summit, right? This was India-Sweden Industry Transition Partnership. Then we are talking about LeadIT Summit, right? This LeadIT, that is Leadership Group for the Industry Transition Member Meet. It was held on 14th of November and was organized by Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Government of Sweden. Right here, Swedish companies are eager to engage in India due to their growth potential and favorable startup ecosystem, so that more startups can come in India, and that will in turn what it will generate employment. It will boost our economy. It will provide better services to the mass. Next,
Next is Maritime Safety Committee 109th session held from 2nd to 6th of December 2024. I repeat, it is MSC, Maritime Safety Committee. It conducted 109th session from 2nd of December to 6th of December. It was held at the International Maritime Organization, headquarter of which is in London, UK. Correct. Here there are some things that we need to discuss. Say for example, ammonia cargo as a fuel, right? So recently it has stated that ammonia can be used as a fuel on the ammonia carriers. Apart from this will come into effect from 1st of July 2026. Then apart from this, remember, exceptional bravery at sea award 2024 was given, and it was awarded to captain and crew of the oil tanker Marlin Luanda. Marlin Luanda. Correct. This is which award? This is your exceptional bravery at sea award. Then apart from this, remember, in order to make sure that our maritime economy is secure, it is flourishing, right? We also need to check that all the ports, all the tech equipments there, all the containers that are transported, they are safe. Then also, in order to maintain the security there, the equipments that will help us to track the enemies there, they are sound, they are updated, and they are on the latest version so that the enemies cannot track. Also, we are focusing that now everything should become renewable, right? We are talking about green logistics, where we are focusing that we know that huge fossil fuel or huge amount of fossil fuel and crude oil is utilized in order to transport these goods from one location to another location, right? So we can make that green, right? We can make that focus fuel green energy, solar energy, or it can be your green methanol, right? Green hydrogen can be used here, right? So that it does not create a large amount of pollution, right? As well as focus was on security. Then one more thing, Navdat. Remember, we are talking about Navdat. NAVDAT. What is this Navdat? Navdat is your digital navigational data system. I repeat, digital navigational data system, right? This is basically to provide the provisions of radio services for the global maritime distress and safety system. This will help us to broadcast using the radio waves, right? So that it becomes easy if an individual is in a distress or need requirement or need emergency help. So this will help us to provide that. Moving on, next is banking and finance. Bank of Baroda has unveiled two new MSME offerings, that is Baroda Mahila Swalamban and Baroda Smart OD. So these two things, right? It is Bank of Baroda that has brought these two things, two MSME offerings, in order to help boost MSMEs, to provide them financing and also to provide help them manage their account. Correct. So Bank of Baroda, they unveiled these two schemes. First is your Baroda Mahila Swalamban and second is your Baroda Smart OD. Now if we talk about this Baroda Mahila Swalamban, Baroda Mahila Swalamban, as it states, it is for the women entrepreneurs, right? Specifically targeting the women entrepreneurs, right? This then second one, that is your Baroda Smart OD. This is a digital overdraft facility that is targeting the GST of the registered MSMEs. Correct. The main objective of these two schemes is, as I mentioned, is basically to ease the financing for the MSMEs. Baroda Mahila Swalamban, here you can see it offers competitive interest rates starting at 9.15%, and its scheme is linked to the Baroda Repo linked lending rate. Then the borrowers can avail loans ranging from 20 lakh rupees to 7.5 crore rupees, and no additional collateral security is required for loans up to 5 crore rupees if secured by Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprise. Right? So remember these things. And if we talk about this Baroda Smart Overdraft, this will use technology driven credit assessment for GST returns, banking activity and online transaction. This will enable the bank to provide quick and easy access loan application to the enterprising individuals. And in this OD facility, that is overdraft facility, it will range from 50,000 rupees to 25 lakh rupees on an interest rate of 10% per annum for a period of 12 months.
right? Apart from this, students, if I ask you, Ratapani Tiger Reserve is where? It is in Madhya Pradesh and it is the 57th Tiger Reserve of the country. Next is IDFC First Bank has launched the India's first AI-powered holographic digital avatar of Amitabh Bachchan for customer engagement. See, we can call this avatar or avatar. Basically, it is a digital identity, or basically a digital person who will look like you only, right? It is animated, correct? So it is IDFC First Bank and they have launched the first AI powered holographic digital avatar of Amitabh Bachchan for the customer engagement. This is important and can be asked. This first device was launched at the bank's Juhu branch in Mumbai, Maharashtra, with plans for future development in various other locations. This avatar will provide various services such as your zero bank free banking, mobile banking, monthly interest credits, and the Bravo current account. Next is economy and business. ISA, that is International Solar Alliance, based out of Gurugram, Haryana, and USAID, that is your USA, United States Agency for International Development, and they signed this MOU basically to enhance the grid interconnections and promote sustainable energy system. This collaboration will aim to expand the adoption of renewable energy, improve cross-border energy connectivity, and develop the unified grids to facilitate large-scale clean power transition or transfer. Correct? Take a note of this. Apart from this, students, if I ask you, tell me, recently India UK 2+2 foreign dialogue was held. Which edition of it was there? It was the second edition and it was defense dialogue that was held in New Delhi, right? Then a platform has been launched to optimize the PDS supply chain. What is the name of that platform? It is Anna Chakra. Then apart from this, if I ask you, recently which two countries has signed a MOU for joint commission for the cooperation? It is between India and Kuwait. Next is awards and recognition. 3 Indians on BBC's 100 most inspiring women's list 2024. They are Aruna Roy, Vinesh Fogart, and Pooja Sharma, right? You can see 3 of them. These are the 3 Indian women's, right, on the BBC's 100 most inspiring women list for 2024. This list released by which organization? First question, BBC, that is British Broadcasting Corporation. This was the 12th edition of this list. Then from India, how many women's were there? 3 Indian women's were listed here, right? Who are they? As you can see, Aruna Roy, Vinesh Fogart, and Pooja Sharma respectively. Correct? Apart from them, the list has also included 2 Indian origin women, that are Sunita Williams from NASA astronaut and Sneha Revanur, a 20-year-old AI expert, right? And the theme for this 2024 is resilience. Next is former president of Chile, Michael Bachelet, to be conferred the Indira Gandhi Peace Prize 2024. As you can see her in the picture here, right? She is Veronica Michelle Bachelet Zeria. I repeat, this is her full name. I repeat, Veronica Michelle Bachelet Zeria, right? She will be conferred with the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2024. Correct? This award is given by, basically this Indira Gandhi Peace Award is given that for an individuals who promote peace and who promote the disarmament of weapons. Correct? And this award has been named after the former Prime Minister of India, that is Indira Gandhi. Correct? And now recently former President of Chile, as you can see here in the picture, Michelle Bachelet will be awarded with this Indira Gandhi Prize for Peace and Disarmament. Next is polarization has been named as the Merriam-Webster's Word of the Year 2024. I repeat, polarization, right? It has been announced as the Merriam-Webster's Word of the Year 2024. Correct? Take a note. Polarization, right? Polarization is basically division into 2 sharply distinct opposites, right? Polarization. Correct? Take a note of this. And what was the Merriam-Webster's 2023 word of the year? It was authentic. And for 2024, it is polarization.
Next is appointments and resignation. Vaibhav Chaturvedi has been appointed as the ex officio member of IBBI. What is IBBI? Insolvency and Bankruptcy Board of India. Correct? Take a note of this. Direct question will be asked. If we talk about IBBI, it was established under the IBC of 2016, that is playing a very important role in the implementation and the enforcement of this code. Also, the main objective of this is to basically see and look after the insolvency and the bankruptcy processes that promotes transparency and accountability. If we talk about Vaibhav Chaturvedi, he has served as the General Manager of Stressed Assets Resolution in RBI from May 2017. If we talk about IBBI only, who is the chairperson here? Ravi Mittal. And the headquarter of this is in New Delhi. Next, Rajiv Mehta became the first Indian elected as the Secretary General of FCA. What is FCA? Fencing Confederation of Asia. And he will be in this position for the next 4 years. Correct? And he was appointed here during the 37th FCA General Assembly that was held in Tashkent, Uzbekistan. And he became the first administrator from India to hold this position. He will be replacing whom? He will be replacing Rusni Abu Hassan. He is of Malaysia. Next is Jan Enuel Ouedraogo has been appointed as the Prime Minister of Burkina Faso. As you can see him in the picture, he is Jean Enuel Ouedraogo. Right? He became the new Prime Minister of Burkina Faso. Next is Jain Mehta's tenure extended as Managing Director of GCMMF by 5 years. What is this GCMMF? It is your Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, which markets Amul dairy products, and he has received a 5-year extension here till FY 2030. Next is science and technology. Iran has recently successfully launched Samman 1 and Fakar 1 satellite into orbit. Then a question can be asked here that which among the following is a nanosatellite, or name that nanosatellite that was launched by Iran. So it is Fakar 1. This is the nanosatellite, right? And Samman 1, this is the OTU, that is your orbital transfer unit. They were launched where? In low Earth orbit. Correct? They were launched using the small 2-stage satellite launch vehicle, the name of which is Simogr. And this was also launched by Iran few times back only. Right? So Simogr, Samman 1 and Fakar, these are the instruments, or these are the technologies of Iran. And Fakar 1, this is a nanosatellite. Correct? Next. Now, if we talk about this Samman 1, this Samman 1 is developed by IRSC, that is Iranian Space Research Center. It is a space tug that will boost the satellites in the low Earth orbit to higher orbits such as geosynchronous orbit. So this will help us to carry the satellite from say low Earth orbit to the geosynchronous orbit. This will be a tug. Then Fakar 1 satellite, it is a nanosatellite, right? This is a communication satellite designed and developed by the Iranian army in collaboration with SA Iran Corporation and Tehran based Malik Astar University of Technology. Next is Obituary. Former Karnataka Chief Minister and Padma Vibhushan awardee Somanahalli Malaiya Krishna has recently passed away, as you can see him in the picture. Right? He is the former governor of Maharashtra state. He passed away at the age of 92 in Bengaluru, Karnataka. He was honored with Padma Vibhushan in 2023. That is the second highest civilian award of India. Right? And one more thing, as the former Karnataka Chief Minister, he was the 10th Chief Minister of Karnataka. He was there from 1999 to 2004. Also remember, he also served as the 19th Governor of Maharashtra state from 2004 to 2008. Next is important days. International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this crime, observed on 9th of December.
right? This marks the adoption of the Genocide Convention that focuses on the prevention and the punishment of genocide and to honor the victims of those genocide. This year it was the 76th anniversary that was observed here, and remember, for the first time, or this was the 76th anniversary of the Genocide Convention, right? Not this day, Genocide Convention, right? For the first time, this day was observed in 2015. Next is International Anti-Corruption Day, observed on 9th of December, and this day is observed basically to spread awareness about the negative impacts of corruption and the role of United Nations Convention on Combating and Preventing Corruption, its role. Correct? Take a note of this. Also, there is a theme for this day, theme being uniting the youth against corruption, shaping tomorrow's integrity. Next is Human Rights Day. It is observed on 10th of December, right? And this day is observed basically to raise awareness about the human rights, right? About various races, color, region, religion, gender, origin or status, right? This year it was the 76th anniversary of United Nations Human Rights Day, right? Alongside the 31st anniversary of the UN Office of Higher Commissioner for Human Rights. Then remember this theme, it is important. Our rights are future right now. This is the theme here that you need to remember for Human Rights Day, observed on 10th of December. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Next, which company has recently partnered with Atal Innovation Mission of Niti Aayog to launch its 4th cohort of Community Innovators Fellows? So right option is Capgemini. They have recently partnered with Atal Innovation Mission of Niti Aayog, right? And this is aimed at fostering innovation and empowering the local innovators to create a sustainable solutions for their communities. Each fellow here will be receiving a grant of 1 lakh rupees. 1 lakh rupees to carry out their innovation. Next, which cluster has recently joined the World Economic Forum's Transitioning Industrial Cluster Initiative to drive economic growth, create jobs and reduce carbon dioxide emissions? It is AM Green Kakinda cluster. Correct? So this is the cluster that has joined the World Economic Forum Transitioning Industrial Cluster Initiative. Here AM Green Kakinda cluster, it will represent an investment of $3 billion. It is projected to create more than 10,000 direct and indirect jobs. This operation will begin in 2026 with the aim of zero carbon dioxide emissions. Next, which company has recently partnered with Yes Bank Limited and National Payment Corporation of India, that is NPCI, to launch their co-branded credit card? It is Rio Money. Rio Money is a Bangalore, Karnataka based fintech company, and they have partnered with NPCI to launch a co-branded credit card by the name Yes Bank Rio Rupee Credit Card. Correct? So Rio Money partnered with Yes Bank, and one more thing, it is Yes Bank and NPCI. So these three are in partnership here. Next, in November, 24 coastal villages from which state were officially recognized as tsunami ready by Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO? It is Odisha state. Important question. Next, which of the following national parks was recently notified as the 56th Tiger Reserve of India? Also remember, recently Prime Minister has congratulated the conservation efforts of tiger as the population of tiger in India is rising, right? And also coming back, the national parks, right? We are talking about it. So which is the 56th national park of India? It is Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve, right? That is the 56th Tiger Reserve now. Where it is located? It is located in the state of Chhattisgarh. Right? Take a note of this. Where is it located? Chhattisgarh. And now it has also become the 3rd largest tiger reserve of India. Right? Which is the largest tiger reserve if we talk about? This is your homework. Largest tiger reserve of India. Tell me. Also tell me the state where this largest tiger reserve is located. Next, which country has recently developing the Iron Beam, a laser-based defense system designed to counter the aerial
threats. So it is Israel, and it has come very handy to Israel because they are able to escape from large number of missiles that are being fired at them because they are currently in war with various countries, right? So what is the name of that system? Iron Beam, and developed by Israel. Can you tell me the name of a similar kind of weapon system that has been developed by India, right? So tell me that also. This is your homework, second homework question. Next, name the portal that was launched during the India Water Week 2024 held from 17th to 20th of September in New Delhi. The name here is Bhu-Neer portal. Portal means a website. It was launched by Chandrakant Raghunath Patil, our Union Minister of Jal Shakti, and he digitally launched this Bhu-Neer portal during the closing ceremony of the 8th edition of the India Water Week that was held from 17th to 20th of September. Where was it held? At Bharat Mandapam in New Delhi. This Bhu-Neer portal, it was developed by Central Groundwater Authority under the Ministry of Jal Shakti in collaboration with NIC, that is your National Informatics Center. This platform will be a one-stop solution that will be measuring and regulating your groundwater resources. This will maintain transparency, efficiency and sustainability. Next, where was the first edition of Sagar Manthan, the Great Oceans Dialogue, that is the South Asia's largest maritime thought leadership summit, was held from where? It was held from 18th to 19th of November. Question asked here that where was this held? What is the location of it? Where was it held? It was held in New Delhi. This event focuses on blue growth, that is your blue is basically your ocean maritime sector, right? So this Sagar Manthan, the Great Oceans Dialogue, will focusing on blue growth, green and blue growth, coast and communities development, maritime sector development, right? And remember, this is the South Asia's largest maritime thought leadership summit. Where was it held? In New Delhi. In New Delhi too, it was at ITC Morya. Next, according to the Climate Change Performance Index 2025, India was ranked what with an overall score of 67.99 on a list of over 60 countries. So India was ranked here 10th in the Climate Change Performance Index, right? This index has left the first three places empty as no country has performed well enough that they can be placed in an overall category of very high in the top three. Which is the fourth position here? Fourth position was secured by Denmark. Fifth position was secured by Netherlands, right? And on 10th position was our India, right? So take a note of this. Also remember this Climate Change Performance Index for 2025. Where was this released? This was released during the COP29 summit that was held where? It was held in Baku, Azerbaijan. Next, who has been recently honored with the Indira Gandhi Peace Prize for Disarmament Development? I repeat, who has been recently honored with the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2023 along with Ali Abu Awad. So Ali Abu Awad was honored, and along with him, who? Daniel Barenboim, right? They both were honored here, correct? If we talk about Daniel Barenboim, he's a very world famous pianist and a conductor, whereas Ali Abu Awad, he is a Palestinian peace activist. They both were honored Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2023, right? Take a note of this. Next is who was recently appointed as the Prime Minister of Uzbekistan. So Abdul Nigamtovich Aripov has been appointed as the new Prime Minister of Uzbekistan, and this is for the third consecutive term. Next, who has been recently re-elected as the Prime Minister of Japan? So Shigeru Ishiba has been re-elected as the Prime Minister of Japan. Next, which laboratory was recently developed indigenous technologies for manufacturing silicon carbide wafers and fabricating gallium nitride high electron mobility transistors along with monolithic microwave integrated circuits? So which is that laboratory? It is your solid state physics laboratory, right? And remember two things, that is your silicon carbide wafers and gallium nitride high electron mobility transistors will be developed here. Next, which country's hockey team has recently won the Women's Asian Championship Trophy 2024? So it is our India's women's hockey team that has won
the Women's Asian Championship Trophy 2024. We defeated we defeated China in the final, and this marks India's third Women's Asians Championship Trophy title. Also, this was the 8th edition of the Women's Asians Trophy Championship title that was held where it was held in Bihar. Next, who has recently retired from professional tennis after Davis Cup finals in Malaga, Spain? So, Rafael Nadal, right? He is from Spain first thing. He plays which sports? He plays tennis, right? And Rafael Nadal in Davis Cup was the final event where he participated. Davis Cup was also held in Spain only, but now he has taken retirement. Next, which anniversary has been recently celebrated with the release of a commemorative stamp in honor of Vattal temple? So, which anniversary has been celebrated? It was the 200th anniversary of the Vattal temple, during which a special stamp was also released to honor the role of Sri Swaminarayan Sampradaya. Right, this temple serves as a spiritual capital of the Sri Swaminarayan Sampradaya. Next is, where was the first Asian Buddhist summit held from 5th to 6th of November 2024? So it was held in New Delhi. Right, the theme of this summit was role of Buddha Dhamma in strengthening Asia. And here, President of India Draupadi Murmu ma'am was the chief guest. Next, who has been recently re-elected as the president of World Sailing? So Lee Kuan Hai, right, was re-elected as the president of World Sailing for a 4-year term. Next, name the Pan-India Coastal Defense Exercise that was conducted by Indian Navy in 2 phases. The name of the exercise is Sea Vigil. This is the 4th edition of this exercise, right? This coastal defense and security readiness exercise, it was conducted in 2 phases, right? Next is, which department under the Ministry of Finance has recently revised the capital restructuring guidelines for central public sector enterprise to enhance operational flexibility, shareholder returns and regulatory changes? It is your Department of Investment and Public Asset Management. Right. Also, these guidelines will also apply to the subsidiaries of CPSEs where the parent CPSE holds more than 51% stake. Also, CPSEs, they must pay a minimum annual dividend of 30% PAT, that is your profit after tax, or 4% of their net worth, whichever is higher. Next, which organization has recently released the report that is Charting New Paths for Gender Equality and Empowerment Asia Pacific Region Report on Beijing Plus 30 Review, stating India struggles with limited effectiveness of its gender response budgeting? So, which organization has released this report? It was released by United Nations Economic Social Commission for Asia and Pacific, that is your UN ECOSOC. Next, which country has recently become 104th full member of International Solar Alliance? It was initiated in 2015 by India and France, and recently, which is the country that became the 104th member of International Solar Alliance? It is Armenia. Next, which bank has recently partnered with UNICEF to enhance the disaster resilience and climate risk management through the initiative Disaster Resilient Communities and Climate Risk Informed Efficient Administrative System? So, which bank? It is IndusInd Bank. They have recently partnered with UNICEF. Next, which organization has recently signed an implementation agreement with Australian Space Agency for strengthening the cooperation in space activities between both the countries? So, which is it? It is Indian Space Research Organization, that is ISRO. They have signed this implementation agreement. It was with Australian Space Agency, right? And it is to work on the space activities together. Basically, here they both organizations will be working on the Gaganyaan mission, that will be the country's first human space flight program. Next, name the China's first commercial uncrewed space plane that was recently unveiled at the Zhuhai Air Show in China. It is Skydragon. Correct. Next, who is the author of the book Ma Mother that was recently released by Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal? So, Dr. Devendra Kumar Dudhawat.
right? He's Arjun. This book is authored by Dr. Devendra Kumar Dodawar, the additional secretary to the government of Kerala, and this book basically contains the illustration of motherhood in the form of poets, in the form of poems that are written both in Hindi and English. Next is, according to Sustainable Trade Index 2024, what was the rank of India globally with an overall score of 24 out of 100. So India stood at 23rd position in the Sustainable Trade Index. As per the Sustainable Trade Index, New Zealand emerged as the most sustainable country for the third consecutive time. Next, according to RBI's data on 20th of November, the net inflows through the external commercial borrowing have increased from 6.8 billion in the first half of April to September for FY24, and it has been increased to how much? To $7.9 billion in the first half of FY25. Next, which bank has recently signed a memorandum of understanding with Maldives Monetary Authority for establishing a framework to promote the ease or the use of local currencies for the cross-border transactions? So between India and Maldives, the local currencies will be promoted, use will be promoted in local currency, trade will be done in local currencies. So which bank has recently signed an MOU? It is Reserve Bank of India that has signed this MOU with the Maldivian Monetary Authority. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 13 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन की। देन हम बात करेंगे मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ऊर्जावीर स्कीम को लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में। देन इंडिया पहली बार चेयरमैनशिप या फिर इंडिया को पहली बार चेयरमैनशिप मिली किस चीज़ की, वो हम डिस्कस करेंगे। देन इंडिया के स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए $100 मिलियन का फंड यहाँ पे लाया गया है। देन हम बात करेंगे COP29 के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में। देन मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी के 109 सेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए अपने सेशन पे चलते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली सुबह 5 बजे हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो जाती है। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज हम रेगुलरली अपलोड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग हो सके। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट्स, नेशनल अफेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन की, जो कि हरियाणा में लॉन्च किया गया। हरियाणा के भी पंचकुला में इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जेपी नड्डा जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। 100 दिन का ये कैंपेन रहेगा कि ट्यूबरक्लोसिस को हमें एलिमिनेट करना है। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को इफेक्ट करती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, बहुत खांसी होती है, बुखार आता है, राइट। एंड टीबी का एक एलिमिनेशन टारगेट भी रखा गया, टारगेट ईयर वो है 2025 यहाँ पे रखा गया सरकार के द्वारा, ताकि टीबी को हमें एलिमिनेट करना है। ये जो कैंपेन था ये भी इसी के अंडर लॉन्च किया गया था, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के ही, कि हमें इंडिया को टीबी फ्री बनाना है 2025 तक। चलिए, अच्छा, इसी के अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं एक दो चीज़ और पूछूं, जैसे बताओ अभी घरचौला साड़ी ये कहाँ का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात का प्रोडक्ट है, राइट। इसी के अलावा इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र में हमें देखने को मिला, राइट। देन एक अभी
पीडीएस सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम था अन्ना चक्रा। मैंने होमवर्क में भी पूछा था, राइट। इसी के अलावा इंडिया एंड यूके 2+2 डायलॉग हुआ था जिसका सेकेंड एडिशन था ये, वो भी कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया ऊर्जावीर स्कीम को आंध्र प्रदेश में। ऊर्जावीर, ऊर्जा मतलब एनर्जी, तो ये कुछ एनर्जी से रिलेटेड होगा, राइट। तो ये ऊर्जावीर स्कीम लॉन्च की गई है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो आपकी ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, राइट, जिसका क्या हो, कॉस्ट भी कम हो, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट भी कम हो, राइट, एंड बजट फ्रेंडली हो। एंड इस ऊर्जावीर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है EESL के द्वारा। ये WESL क्या है, एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड के द्वारा। मैं फिर से बता रहा हूँ इनका एम क्या है, स्कीम का मोटिव क्या है कि हमें एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जो हैं उनको प्रमोट करना है ताकि एनवायरनमेंट को भी फायदा मिल सके एंड इंडिविजुअल के भी ये बजट फ्रेंडली रह सके, राइट। इस इनिशिएटिव के अंडर पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई कि हमें 100% ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। इसी ऊर्जावीर स्कीम के अंडर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1,12,000 ऐसे प्राइवेट रजिस्टर्ड इलेक्ट्रीशियंस को ट्रेन किया जाएगा जिनको ऊर्जावीर बोला जाएगा एंड ये प्रमोट करेंगे ये एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को। नेक्स्ट आता है फिर इंडिया ने अज्यूम किया फर्स्ट टाइम चेयरमैनशिप ऑफ 68th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, राइट, कि हमें ड्रग्स को रोकना है, राइट। उसके लिए पूरे एक कमीशन बिठाई जाती है, इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि कैसे क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, करेक्ट। तो ये 68th सेशन की जो चेयरमैनशिप थी किसके पास थी, हमारी इंडिया के पास। नेक्स्ट आते हैं फिर DPIIT, जो कि है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। इन्होंने एक MOU साइन किया न्यू दिल्ली बेस्ड फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये इंडिया की ही एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड इनका फोकस था कि जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे ग्रो किया जा सके, उनको मेंटर किया जा सके, स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, फंडिंग की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड की जा सके एंड उनकी प्रॉपर मेंटरशिप करके उनको आगे ग्रो किया जा सके, राइट। एंड इसी के लिए यहाँ पे $100 मिलियन का फंड भी इस्टेब्लिश किया गया है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। इंडिया की बात करेंगे, COP29 की कुछ की इनिशिएटिव्स हमने कल देखे थे एंड इसका याद रखेंगे यहाँ पे इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड CDRI का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। इसी के अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया का एंड स्वीडन का एक इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप भी साइन हुआ है ताकि इंडिया में एंड स्वीडन में मिलके हम आगे मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करके आगे ग्रो कर सकें। इसी के अलावा LeadIT समिट को बात करेंगे जो कि है लीडरशिप फॉर द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन मेंबरशिप मीट। ये 14 नवंबर को हुई थी एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पे जो स्वीडिश कंपनीज है ना, दे आर ईगर, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं एंड इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो ग्रोथ स्टोरी है उसका पार्ट होना चाहती हैं क्योंकि इंडिया का इकोसिस्टम काफ़ी फेवरेबल है स्टार्टअप एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मैरीटाइम सेफ्टी। इन्होंने मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी की 119th सेशन हुआ फ्रॉम 2nd to 6th दिसंबर, राइट। ये जो मैरीटाइम सेफ्टी क्या है, बेसिकली हमें अपने मैरीटाइम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, राइट। हमारा बहुत सारा गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, राइट, एंड उसकी सेफ्टी के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमें वो प्रॉपर एडवांस्ड होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए ताकि सर्विलेंस में कोई दिक्कत ना आ सके, राइट। हमारे जो शिप्स हैं ट्रांसपोर्ट के वो अप टू डेट होने चाहिए, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इवन यहाँ पे कई सारी इनिशिएटिव्स भी इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं कि हम ग्रीन लॉजिस्टिक्स पे फोकस करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें जो भी फ्यूल लगता है हम उसको रिन्यूएबल फ्यूल बनाएं या फिर ऐसा फ्यूल बनाएं जिससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, करेक्ट। इवन जो ये शिप्स हैं ये आप देखिए काफ़ी ज़्यादा फॉसल फ्यूल को लेके जाती हैं, राइट, एज अ फ्यूल कि इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो क्यों ना हम उनको ही चेंज करके उस फ्यूल को ही ग्रीन बना दें, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा। एक चीज़ और यहाँ पर अभी एक अवार्ड याद रखेंगे, एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी 2024 अवार्ड। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया टू द कैप्टन एंड क्रू ऑफ द ऑयल टैंकर जिसका नाम है मैरलिन लुएंडा। ये ऑयल टैंकर का नाम है जिसके क्रू को एंड कैप्टन को यहाँ पे एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने अनवेल की 2 नई MSME ऑफरिंग्स। पहले का नाम रहेगा बड़ौदा महिला स्वावलंबन एंड दूसरा है बड़ौदा स्मार्ट
ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। तो ये दो चीज़ याद रखेंगे। जो ये बड़ौदा महिला स्वावलंबन है ना, ये बेसिकली क्या है, स्पेसिफिकली वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, उनको ग्रो किया जाएगा, राइट। एंड दूसरा जो बड़ौदा स्मार्ट ओडी है, ये क्या है आपका बेसिकली स्मार्ट ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे बेसिकली इस ओडी के अंदर यहाँ पे फाइनेंस का काम किया जाएगा ताकि एमएसएमईज ग्रो कर सकें, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, बड़ौदा महिला स्वावलंबन ये ऑफर करता है 9.15% इंटरेस्ट रेट, करेक्ट। ये स्कीम आपकी बड़ौदा रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट से रहेगी। यहाँ पे बोरवर्स इस बड़ौदा महिला स्वावलंबन के अंदर जो वीमेंस हैं, जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, 20 लाख से लेकर 7.5 करोड़ तक का यहाँ पे लोन ले सकती हैं। वहीं पे नो एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड अगर वो 5 करोड़ तक का लोन लेती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ओडी की, जो कि है आपका बड़ौदा स्मार्ट ओडी, यहाँ पे आपका मेन फोकस रहेगा जीएसटी रिटर्न्स पे, राइट। ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड इसके अंदर 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है 10% के हिसाब से फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। चलिए नेक्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें। इन्होंने इंडिया का पहला एआई पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार लॉन्च किया है अमिताभ बच्चन जी का फॉर कस्टमर एंगेजमेंट। अवतार क्या होता है, एक आपका बेसिकली कार्टून टाइप में आपके होते हैं, मतलब एनिमेटेड होते हैं वो, एंड आपके बिल्कुल ह्यूमन बॉडी जैसे लगते हैं, तो वो अवतार होते हैं। आपने कई जगह देखे होंगे, स्नैपचैट पे भी, आपके व्हाट्सएप पे भी अवतार्स आते हैं, राइट। तो अमिताभ बच्चन जी का, जो कि काफ़ी फेमस एक्टर है, इनका भी एक डिजिटल होलोग्राफिक अवतार लॉन्च किया गया है ताकि जो कस्टमर एंगेजमेंट है ना उसको बढ़ाया जा सके। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एआई पावर्ड होलोग्राफिक डिजिटल अवतार रहेगा ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी। पहला डिवाइस जो यहाँ पे अवतार का रहेगा इसका होलोग्राफिक, वो बैंक ऑफ जुहू ब्रांच की जो बैंक है मुंबई में, वहाँ पे लॉन्च किया गया था, करेक्ट। एंड यहाँ पे इस मशीन पर जहाँ पे ये अवतार है, होलोग्राफिक अवतार है, इसमें जैसे जीरो फी बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट्स, ये सब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड यूएसएआईडी, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन्होंने ज्वाइन किया फोर्सेस टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कनेक्टिविटी, राइट। तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा दे सके, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जा सके, सस्टेनेबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जा सके, जो ग्रिड्स हैं जो लोकेटेड हैं, ताकि मान लो सोलर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी ए पोजीशन पे जनरेट हो रही है लेकिन हमें उसको चाहिए बी पोजीशन पे, तो इसके लिए प्रॉपर ग्रिड्स की कनेक्टिविटी हो सके, प्रॉपर इकोसिस्टम बन सके ताकि फ्रूटफुल हो सके ये वेंचर। जैसे अगर आपको याद हो कि नेपाल बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, नेपाल बनाएगा उसको, हाइड्रो पावर रहेगी वो जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, लेकिन उसको डिलीवर करेगा टू बांग्लादेश। तो ये कैसे करेगा, इंडिया की ग्रिड की मदद से ये यहाँ पे डिलीवर करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। 3 इंडियंस ऑन बीबीसीज 100 मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेंस लिस्ट 2024। कौन कौन है ये, अरुणा रॉय, विनेश फोगाट एंड पूजा शर्मा। तो सबसे पहले ये 100 मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन लिस्ट 2024 की किसके द्वारा रिलीज की गई, बीबीसी के द्वारा। कितनी इंडियन वीमेन इस पे लिस्ट थी, 3। कौन कौन है, अरुणा रॉय, विनेश फोगाट एंड पूजा शर्मा, करेक्ट। ये 12वां एडिशन है इस लिस्ट का जो कि रिलीज किया गया है। एंड इन वीमेंस का जो एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी फील्ड में, जैसे सोशलिज्म, सोशल एक्टिविज्म, स्पोर्ट्स एंड सोसाइटल बैरियर्स को ब्रेक करके आगे बढ़ना, तो उनके लिए यहाँ पे इनको यहाँ पे ऑनर किया गया इस लिस्ट में डालकर। अगर मैं बीबीसी की बात करूं, बीबीसी के चेयरमैन कौन है, समीर शाह, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, लंदन यूके में। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली मिशेल बैशलेट, इनको कन्फर किया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज से। ये अवार्ड दिया जाता है जो पीस को प्रमोट करते हैं एंड डिसआर्मेंट, मतलब आपके वेपन्स को रिड्यूस करने की बात करते हैं, एंड उसके लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, उन व्यक्तियों को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज से। तो अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली मिशेल बैशलेट, आप यहाँ पे इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है ना, ये बेसिकली इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1986 में, बाय देन प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, इन ऑनर ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन नेम्ड मैरियम वेबस्टर्स 2024 वर्ड ऑफ द ईयर। तो
2024 का पोलराइजेशन। अगर मैं 2023 का पूछ लूँ, 2023 का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है मेरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर, तो वो रहेगा 2023 का ऑथेंटिक, ठीक है, और 2024 का पोलराइजेशन। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। वैभव चतुर्वेदी, वैभव चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ आईबीबीआई। आईबीबीआई क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द आईबीसी ऑफ 2016 एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इन्फोर्समेंट कोड है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। आईबीबीआई के चेयरपर्सन कौन है, रवि मित्तल, एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट है राजीव मेहता। ये पहले इंडियन बने जिनको इलेक्ट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ एफसीए। एफसीए क्या है, फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट, फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया। फेंसिंग वो आपका स्पोर्ट्स नहीं होता जिसमें आपकी आपने देखा होगा मुंह पर भी, पूरी बॉडी पर भी एक मास्क रहता है और एक सूट रहता है एंड वो छोटी छोटी स्वॉर्ड से लड़ते हैं, दैट इज फेंसिंग, करेक्ट। एंड इनको यहाँ पे 4 ईयर का इनका टर्म रहेगा। 37वीं एफसीए जनरल असेंबली थी तस्केंद उज्बेकिस्तान में, जहां पर इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एफसीए, राइट। ये फॉर्मर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जीन इनेमुअल और ड्रागो। इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुर्किना फासो, डायरेक्टली याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जैन मेहताज टेन्योर एक्सटेंडेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि अमूल डेयरी प्रोडक्ट को हैंडल करती है, जिनको मार्केट करती है। तो जैन मेहता का जो एमडी है, जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, उनका टर्म 5 साल से यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, उनका एक्सटेंशन मिल गई है 5 साल की FY 2030 तक। नेक्स्ट साइंस एंड टेक की बात करते हैं। तो ईरान के द्वारा अभी सम्मान 1 एंड फकर 1 ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है इनटू ऑर्बिट। ये जो सम्मान 1 है ना, ये बेसिकली आपका एक टग है। टग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करेगा। तो ये सम्मान 1 जो टग है, ये क्या काम करेगा, जो सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में है, राइट, उनको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने का काम करेगा। तो ये क्या है, सम्मान 1 ये एक टग है, एंड फकर 1 ये एक आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि एक नैनो सैटेलाइट भी रहेगी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस कंट्री के द्वारा अभी एक नैनो सैटेलाइट लॉन्च की गई, ईरान के द्वारा, या फिर ईरान के द्वारा अभी एक नैनो सैटेलाइट लॉन्च की गई, उसका नाम बताओ, तो फकर 1, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर एंड पद्मा विभूषण अवॉर्डी सोमानली मलैया कृष्णा, आई रिपीट, सोमानली मलैया कृष्णा, राइट, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये फॉर्मर कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर हैं, करेक्ट। एंड बात करें तो इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2023 में, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। फिर अगर हम इनकी बात करें, 10th चीफ मिनिस्टर थे ये कर्नाटका के 1999 से लेके 2004 तक, एंड 19वें गवर्नर रह चुके हैं ये महाराष्ट्र स्टेट के 2004 से लेके 2008 तक। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, ये ऑब्जर्व किया जाता है 9 दिसंबर को, राइट। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो जेनोसाइड हुआ था, राइट, जेनोसाइड कन्वेंशन हुआ था, उसको अडॉप्ट करने की बात की गई। एंड जेनोसाइड को रोकने के लिए, मास किलिंग, जेनोसाइड होता है बहुत सारे लोगों को मार देना एक साथ, राइट, करेक्ट, एंड इसको अवॉइड करने के लिए कि ऐसी कोई पनिशमेंट ना हो, राइट, ऐसा कोई सिनेरियो ना हो जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सके, इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 9 दिसंबर को। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 9 दिसंबर को ही ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इसका मेन एम क्या है कि जो भी करप्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको सामने लाना, करप्शन को रोकना, एंड एक बेटर इकोनॉमी को फ्लरिश करने का मौका देना। चलिए, तो दोस्तों ये थे इसके। अच्छा, एक और है ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलना। ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमैनिटी की, जो हमारे लोगों की जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना। एंड इर्रिस्पेक्टिव आपकी क्या रेस है, कलर है, किस रिलीजन के हो आप, क्या जेंडर है, राइट, इसके
खिलाफ हटके सबका एक बराबर राइट है, उसको उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, आर राइट्स आर फ्यूचर राइट नाउ। राइट, ये आपकी थीम रहेगी, मार्क करेंगे, इसको पूछा जा सकता है आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, GRAI, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है अभी ये पूछा गया है। तो जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पर्सनल्स हैं। इनके द्वारा GRAI 2023 को लॉन्च किया गया है। राइट, एंड इसकी एक नेशनल वर्कशॉप हुई थी जो कि विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई। इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराया गया था DARPG के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवियंसेस के द्वारा। जो पहला एडिशन था GRAI का वो 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। किस कंपनी ने भी रिसेंटली पार्टनर किया अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ टू लॉन्च द 4th कोहॉर्ट ऑफ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। तो किन्होंने किया ये, केप जेमिनी इंडिया ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनर किया है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ, ताकि 4th कोहॉर्ट ऑफ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। इसका एम रहेगा कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस यहाँ पे डेवलप किया जा सके लोकल कम्युनिटीज़ में, रूरल कम्युनिटीज़ में, ताकि वहाँ पे इनोवेशन प्रमोट की जा सके। एंड यहाँ पे हर फेलो को 1 लाख रुपए तक का कैश प्राइज दिया जाएगा ताकि वो अपने इनोवेशन को फर्दर स्केल कर सके। नेक्स्ट, किस क्लस्टर ने रिसेंटली ज्वाइन किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को। तो किस क्लस्टर ने ज्वाइन किया, वो है AM ग्रीन काकिंदा क्लस्टर। ये AM ग्रीन काकिंदा क्लस्टर बेसिकली कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। एंड इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। यहाँ पे 3 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। 10,000 प्लस जॉब्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे डेवलप की जाएगी। एंड 2026 में इसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को यहाँ पे जीरो करने की बात की गई है। अगला है कि किस कंपनी ने अभी येस बैंक के साथ मिलके एंड NPCI के साथ मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की बात करी। तो किन्होंने पार्टनर किया, रियो मनी। रियो मनी एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है। इन्होंने येस बैंक एंड NPCI के साथ मिलकर यहाँ पे ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की बात की गई। अगले पर आते हैं, अभी कौन सी कोस्टल, किन 24 कोस्टल विलेजेस को किस स्टेट में से डिक्लेयर किया गया सुनामी रेडी बाय यूनेस्को। तो ओडिशा की 24 कोस्टल विलेजेस को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है सुनामी रेडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, अभी 56 टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का, कौन सा नेशनल पार्क है वो है गुरु घसीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क, जिसको अभी 56 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ में है। ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है। बताओ फर्स्ट लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, किस स्टेट में है, ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा, एक और चीज़, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि जो टाइगर पॉपुलेशन है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया में इंक्रीज होती हुई दिखी है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली या विच कंट्री इज रिसेंटली डेवलपिंग द आयरन बीम, ये एक लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम है कि आपकी जो इनकमिंग मिसाइल्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये आयरन बीम किसका है, इजराइल का है। राइट, एंड अभी इजराइल को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस आयरन डोम ने, बहुत सारी मिसाइल्स को इन्होंने रोका है। ऐसा ही सिमिलर काइंड का एक आयरन बीम इंडिया के पास भी है, उसका नाम क्या है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। थोड़े टाइम पहले इंडिया ने डेवलप किया है। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द इंडिया वाटर वीक 2024 के दौरान 17 से 20 सितंबर तक न्यू दिल्ली में। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, भू नीर उस पोर्टल का नाम रहेगा। पोर्टल मतलब वेबसाइट। इसको 8th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक के दौरान लॉन्च किया गया था एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा जहां पर आप मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को, जिससे एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट, कहाँ पर फर्स्ट एडिशन ऑफ सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग को, जो कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप समिट है, इसको लॉन्च किया गया, या फिर कहाँ पर हुआ था, 18 से 19 नवंबर तक ये। राइट, तो यह है पहला एडिशन, इनॉग्रल एडिशन ऑफ सागर मंथन। तो सागर मंथन हुआ कहाँ पर था, ये न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिला था। न्यू दिल्ली में भी इसकी इवेंट हुई थी, न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर, ITC मौर्या होटल में। ठीक है, यहाँ पर मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करने की बात की गई, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 इंडिया की क्या रैंक रहेगी, इंडिया 10th पोजीशन पे आ जाता है
इंडिया 10th पोजीशन पे आ जाता है इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट। पहली 3 पोजीशन यहाँ पे खाली छोड़ी गई हैं क्योंकि किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। चौथे पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क, 5वें पोजीशन पे आ जाता है नीदरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023 अवार्ड अलॉन्ग विद अली अबू आवद। तो अली अबू आवद एंड डेनियल बेरेनबोइम, इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए एंड पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए, राइट, उनके सोशल वर्क के लिए, उनकी पीस वहाँ पे प्रमोट करने के लिए, नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। तो अब्दुल निगामोतोविच अरिपोव, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली रीइलेक्ट किया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। प्राइम मिनिस्टर जापान के कौन रीइलेक्ट करे गए हैं, वो है शिगुरु इशिबा। नेक्स्ट, किस लेबोरेटरी में रिसेंटली डेवलप किया गया इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स एंड फैब्रिकेटिंग गैलीलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स को अलॉन्ग विद मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स एंड गैलीलियम नाइट्रेट हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स को अभी कहाँ पे डेवलप करने की बात की गई, किस फैक्ट्री में? फैक्ट्री का नाम रहेगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, ये डीआरडीओ का ही यूनिट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री की हॉकी टीम ने जीता वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को? तो हमारे इंडिया ने इसको जीत लिया है, राइट। तीसरी बार हमने इसको जीता है। ये 8वां एडिशन था वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का। इसका फाइनल इवेंट या फिर ये हुआ कहाँ पे था, बिहार में हुआ था। इंडियन वीमेंस टीम ने चाइना की वीमेंस टीम को यहाँ पे फाइनल में हराया।